What they are looking for is not just a textbookish or a bookish answer. They're not looking for rote learning. कि अगर उन लोग ने पूछ लिया है कि write about civil disobedience movement तो book में जितना लिखा है आप उतना उठा के लिख दो. They are also looking कि आप क्या सोच पा रहे हो. Civil disobedience में book में इतना अच्छा लिखा हुआ है, but what is your analysis? What are your ideas on that? Obviously history में बहुत scope नहीं होता है for creativity and analysis. Still हम किस तरह से present कर रहे हैं अपने आंसर काफ़ी मैटर कर जाता है. तो एक जनरल आंसर राइटिंग का मेरा रूल ये था कि जितने भी एनसीईआरटी के मैं चैप्टर्स पढ़ रही हूँ उसमें पीछे चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं. उन क्वेश्चंस को मैं लिखने की कोशिश करती थी और उसमें कोशिश करती थी कि थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उन्हें लिखूँ. एंड उसको फिर डिस्कस कर लिया अपने फ्रेंड सर्कल में या ऑनलाइन ही डिस्कस कर लिया. बहुत सारे फोरम्स हैं टू शेयर आइडियाज़ ऑनलाइन. तो एक तो एनसीईआरटी के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लिया. दूसरा होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स. उसमें वेरी हैंडी कम्स दी ऑनलाइन वेबसाइट्स. सो आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का कोई आर्टिकल निकला है. फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑनलाइन, हर दिन वो डेली क्वेश्चन आंसर्स देते ही रहते हैं ऑन वेरियस फोरम्स. आपने उस आंसर को लिखने की कोशिश की. सो इन दैट वे यू गेट अ प्रैक्टिस कि हम न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर ऑफ अ जीएस पेपर. तो दिस वाज अ जनरल स्ट्रैटेजी कि मैं हर दिन 3-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिखने की कोशिश करती थी. एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स लिखने की कोशिश करती थी और जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिखने की कोशिश करती थी. तो पहली बार जिस भी टॉपिक में आप सबसे कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपको लगता है मैं सबसे ज़्यादा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, गो फॉर दैट. डू नॉट अप्लाई दैट अननेसेसरी ब्रेन की ये तो सब लिख रहे हैं मैं नहीं लिखूंगा. डोंट ट्राई टू बी टू डिफरेंट. जिसमें कंफर्टेबल है वो. दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, 15 से 20 मिनट. इनफैक्ट फर्स्ट ऐसे के लिए तो इस बार मैंने लगभग 25 मिनट दे दिए थे. जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, पूरा डायग्राम बनाती थी लास्ट पेज पे रफ में. ज़्यादा डायमेंशंस खोलने की कोशिश करती थी और हर डायमेंशन में एग्जांपल्स एंड देन जस्ट द राइटिंग पार्ट वाज लेफ्ट. तो अ लॉट ऑफ टाइम इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन अराउंड 1 hour to write the essay. What I did was I downloaded the topper booklets of last few years toppers. Anudeep Durishetty sir, his answer copies were quite enlightening to quite an extent in giving out a structure and actually breaking one myth that you need to write like really beautiful answers. Like I was still under the impression that I need to write great answers when it comes down to UPSC. But I think if you're writing fairly average answer, you can just simply get away with it because you do not have the time to write beautiful answers there. So for that, if you're just going to write a normal, decent, average answer, which will fetch you the minimum marks, which I did, I think 100 out of 250 in a GS paper is not a great score, but still worked for me, still got me where I am. So even if you're writing average answers, just ensure that you are finishing the paper because that should be your number one priority. And after that, obviously just write enough content. This cannot be overstated. I'm not saying I wrote generic answers. I wrote very specific answers, but I still think they were average. But you need to ensure that you beautify your content at many levels. So you have to quote those reports, you have to quote those committees, you'll have to quote the right articles in your opening and conclusion. All of those things you need to do. And finally, of course, the structure of your answer. I think it's very simple. Many people have said it before me. Many people will say it after me. Introduction, body, conclusion. That's the thing you need to follow. You need to write a good 3-4 line introduction. You need to write a fairly good conclusion, and in the body, address each part of the question. Ensure that you are explaining. Ensure that you are addressing the demand of the question. That's one thing that most people miss. They think that is in my notes. I read this article. This I can remember from that monthly compilation, and they'll start putting out those points. But read the question because the question might not be from where you read the answer from. It will be vastly different. So you have to ensure that you read the question properly and you address the demand of the question and make the subheadings right in bullet points. Again, fairly generic thing that they tell you. That's all that I followed and it worked out for me. ये मैंने अच्छे से जो है जीएस में भी और ऑप्शनल में भी मैंने टेस्ट काफ़ी लिखे और आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द स्ट्रेंथ है कि अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो प्रेजेंटेशन अच्छा है एंड जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको मैं अच्छे से जो है वो 3 घंटे में लिख पाता हूँ. तो ये जो है ये प्रैक्टिस मैंने किया. और इस बार जो ऑप्शनल के लिए है, जैसे जीएस और ऑप्शनल के बीच में 5 दिनों का गैप होता है, तो उस गैप में भी मैंने जो है ऑप्शनल का 2 टेस्ट लिखा था. Answer writing is something I practiced a little less, but maybe that got compensated because I was taking daily notes, right? So and the note work was very
proactive note work, not like मैं line copy कर रही हूँ. अगर कोई women's issue है तो मैं उसको सोच के किस women's issue में डालूंगी, उसके क्या क्या angles हो सकते हैं. तो it was proactive note taking. So maybe that compensated for answer writing. But first level of answer writing practice was when I made an Unacademy course on answer writing. Okay. And that was something that really helped me understand the demand of UPSC questions. So this was in 2017 June July. Okay. उस समय मैंने एक कोर्स बनाया था, उसमें I must have written about 100 answers. Okay. That is for GS. Then for history optional, I did a lot of tests and I wrote individual answers as well. Other than that, मैंने answers नहीं लिखे हैं. Test series मैंने I had enrolled for one, but in 2018 I only gave 2 tests. One for paper 1, one for paper 2. That's it.